for me it's not just about acting, it's about film making. मेरे को lately बहुत ज़्यादा direction में interest आया है. I have the habit of writing also. Story बहुत ही interesting है. Story is very interesting. I don't know कि past Nagins में क्या हुआ है. I haven't watched past Nagins, but I just know one thing, that this Nagin is going to be like really different than other Nagins. हमने उस चीज को कॉपी नहीं किया कि कोविड हो गया है या ऐसा कुछ हो गया है. We have just inspired. हमने इंस्पायर हुए हैं उस कॉन्सेप्ट से. एक चीज मैंने बहुत सुनी है, दैट बिग बॉस तो लड़ने का शो है. बिग बॉस तो वो इनफेमस है इस चक्कर में. मेरे को करण भाई तेजा दोनों ही बहुत प्यारे लोग लगते हैं. Hi Simba, welcome to Pink Villa. Hey Avinash, thanks for having me. You know, firstly, let me tell you, there's already so much buzz around Nagin 6. It's a show that everyone is looking forward to. And even before we start speaking about it, I want to ask you, do you believe in shape-shifting snakes? I, in particular, don't believe in shape-shifting snakes, but I definitely believe that there's more in the universe that we see. Yeah. इतना मैं मानता हूँ, वरना लोग तो भगवान पे भी डाउट करते हैं कि भगवान भी नहीं है. लेकिन हर एक चीज दिखती नहीं है और होती है. तो डेफिनेटली यूनिवर्स इज प्रीटी बिग. यू नेवर नो, शेप शिफ्टिंग नागिन्स भी होती हैं. बिल्कुल. आपने अपने इंस्टाग्राम बायो पे अपने आप को एक गो गेटर करके डिस्क्राइब किया हुआ है. एंड आई हैव सीन योर जर्नी राइट सिंस द बिगिनिंग. Simba, I remember I have seen the Splitsvilla season which you were a part of. I think you were 22 back then, and it's been quite an interesting 21. 21, sorry. It's been quite an interesting journey ever since then. When you look back at it now, you know, how do you feel? Do you feel content of the work you've done so far? Definitely. मतलब it's like it's been steps for me. मेरे लिए ये सारी सीढ़ियाँ हैं. Because जो मेरी dreams हैं वो तो खैर क्या ही बोलूँगा, लेकिन all of these are like baby steps that I've been taking, and obviously Splitsvilla was the first जिसने मुझे actually recognition दिया. But to be honest, मैं हमेशा से ही एक एक्टर बनना चाहता था. I've never wanted to enter reality shows and ये सब चीजें. But definitely I wanted to do all of those tasks, because at the same time I'm a really adventurous guy also. मेरे को ये adventures और ये journeys, experiences, traveling ये सब करना बहुत पसंद है. लेकिन for me, if I talk about my ambition, it's always been to be an actor. Sure. And I've always had that confidence कि कभी ना कभी I'm gonna do it. आपने अभी कहा मैं ड्रीम्स के बारे में क्या बोलूं, क्या है ये ड्रीम्स? It's like to explore each and every side of this industry. It's amongst this industry only, but not only Bollywood, not only Tollywood, not only Hollywood. It's like everything I wanna explore. Sure. And जब तक I don't start making my own concepts. And मतलब for me it's not just about acting, it's about film making. मेरे को lately बहुत ज़्यादा direction में interest आया है. I have the habit of writing also. So मैं गाने भी लिखता हूँ, मैं poems भी लिखता हूँ, मैं कहानियाँ भी लिखता हूँ. So definitely when अभी तो I'm just learning यार. This is my learning phase right now going on. Sure. And I'm glad that God has blessed me in such a way that I'm learning like this. So it's a big deal for me. But I consider it as my learning process. Sure. Have you written anything as of now which you are confident enough to present it maybe to Ekta Kapoor? Of course, I can actually. Have you thought about it? Have you discussed it? No, I haven't thought about telling it to Ekta ma'am as of yet. Because, but you never know यार what life brings to you. But definitely अगर मुझे कभी ऐसा opportunity या कभी ऐसा chance मिलता है या कभी मुझे ऐसा लगता है that I should, then I will definitely. But otherwise, I have it ready already. I'm sure you will, and I wish you all the best for it. Moving on to Nagin 6, I have to ask you this, Simba. Nagin is a show which can go both ways. You know, the first, second, and the third season did very well. Fourth and the fifth received a lukewarm response from the audience. So when you took on to the show, especially a show which is so heavy on VFX, you know, people can target that section of the show as well. Were you conflicted about taking it up at any point? No. मैंने जब नरेशन सुना, जब मैंने कहानी सुनी, जब मैंने अपने कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन सुना, straight away, because I've always wanted to play an army officer as well. I've always wanted to do a dark shade of a character as well. And मेरे को दोनों ही इसमें करने का मौका मिल रहा है. So definitely I had to say yes. And at the same time, story बहुत ही interesting है.
Story is very interesting. I don't know कि past Nagins में क्या हुआ है. I haven't watched past Nagins, but I just know one thing, that this Nagin is gonna be like really different than other Nagins. इसका कहानी बिल्कुल ही मॉडर्न जमाने के हिसाब से लिखा गया है, एंड आई कुड रिलेट टू इट. मैं रिलेट कर पा रहा था सुनते हुए भी, एंड मैं तो क्रिस्टोफर नोलन व्यूअर हूँ. तो अगर मेरे को वो कहानी में इतना इंटरेस्ट आ रहा है, देन आई एम श्योर यार कि मतलब, बिकॉज आई एम अ पैशनेट वॉचर ऑल्सो. मेरे को देखना भी बहुत पसंद है मूवीज, एंड गुड मूवीज आई लव टू वॉच. ये फैंटेसी सब्जेक्ट्स, इफ आई टॉक अबाउट मार्वल, तो ये सब चीजें मेरे को बहुत फैसिनेट करती है. जब मैंने ये सुना दैट इट्स फैंटेसी एंड उसके बाद ऐसा कॉन्सेप्ट, सो डेफिनेटली आई नो. एंड रही बात लूम की, तो दे ऑलवेज लव एंड हेट वन थिंग. लोग, नो वन कैन लाइक एवरीथिंग, नो वन कैन हेट एवरीथिंग. वो तो चलता ही रहता है. But to take up a topic that revolves around pandemic, COVID-19, do you think it's too early? Probably we are still learning how to deal with this situation. Yes, we definitely are learning, but it's actually, the thing is that we aren't copying the COVID thing. Yeah. हमने उस चीज को कॉपी नहीं किया कि कोविड हो गया है या ऐसा कुछ हो गया है. We have just inspired. हमने बस इंस्पायर हुए हैं उस कॉन्सेप्ट से. That एक वायरस का कॉन्सेप्ट है, so हम बस उससे इंस्पायर हुए. It's not COVID. Sure. It's not COVID. It's not Omicron either. लेकिन वो बस एक इंस्पिरेशन है. It's just another virus. Yeah. कि ऐसे महामारी फैला रहा है. So लेकिन कहानी is gonna be really different. And जो उसका कॉन्सेप्ट है, आगे जाके आप देखेंगे, it's कोरोना से ज्यादा कोई रिलेशन है नहीं उसका. Sure. Also, when we talk about, before Nagin 6, you were a part of Big Boss 15. And of course, the journey wasn't very long, but you received a lot of love from the audience and from your fans. But has the show been a thing of past for you? जैसे आप Big Boss finale में नहीं दिखे थे और बहुत लोगों ने बोला कि maybe you still have grudges against the show because taking you out of it without a proper eviction process. What do you have to say about that? अविनाश, मुझे ऐसा लगता है कि Big Boss, मैंने कभी ऑनेस्टली बिग बॉस भी नहीं देखा था, एंड ना मैंने अपना सीजन देखा है, ना मैंने उसका पुराना कोई भी सीजन देखा है ऑनेस्टली. बट एक चीज मैंने बहुत सुनी है, दैट बिग बॉस तो लड़ने का शो है. बिग बॉस तो वो इनफेमस है इस चक्कर में कि वहां पे इतनी लड़ाइयाँ होती हैं ये सब. एंड मैं इन पर्सनल लाइफ आई एम नॉट वेरी एग्रेसिव. आई एम नॉट कोई ज्यादा चीखता चिल्लाता नहीं हूँ मैं किसी पे फालतू में. जब मैंने सुना तो I was having this meeting with the creators of the show, and I was like, ऐसा है क्या? They were like, no, you just have to be yourself and everything. I was like, then why? ऐसा लोग क्यों बोलते हैं कि लड़ने का शो है? Why is it so infamous? And लोग क्यों ऐसी disrespect पाकर बाहर निकलते हैं? मैंने देखा है कि ऐसा क्यों होता है. So they're like, this and that. Then I was like, कि ठीक है, अगर ऐसा है तो maybe people must be like this. Maybe. So I think I'm good enough यार, मतलब कि I'm satisfied with who I am. So I just chose to be myself. I'm not an attention seeker कि मुझे कोई भाई दिखना है मेरे को तो कैमरा के आगे खड़े होके मैं चिल्लाऊं. I'm not a person like that. कैमरा के आगे मैं सिर्फ तब जाना चाहूंगा जब मुझे एक्टिंग करनी है. In real life, I wouldn't like cameras around me. So वही बात थी वहाँ पे. I just chose to be my real self. मुझे दिखता था वहाँ पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट मेरे अंदर से naturally आता था कि nothing यार, it's a small thing. Why will I enter in this thing? Sure. अब उसके बाद लोगों को लगा ये वो, I don't care about that. You and your Nagin 6 co-star Tejasvi were both a part of the same show. Do you think that equation helps you here also while you are working together now? Yeah, definitely. हम पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो पहले दिन ही जब हमारा शूट साथ में हुआ तो we had this mutual bond, जिससे हमें कोई ज्यादा ऐसे नहीं लगा कि first we need to get to know each other, because that matters a lot कि आपकी equation आपके co-actor के साथ क्या है. And वो already we were good friends, and now our bond is getting even more strong. And साथ ही साथ she is a very hard-working girl and she is very talented at the same time. तो बहुत मजा आ रहा है उनके साथ काम करके, and yeah, I hope it turns out great on screen. Sure. In November, you did an interview where you said that you felt her equation with Karan Kundra, or the love angle, seemed forced. Has your opinion changed now?
Yeah, I think so. It's changed now. Because उस time जब मैं घर में था, नहीं, to be honest, not just because I'm doing a show with her or something like that. I'm not saying it just because of that. I'm not scared of anyone. लेकिन honestly, क्योंकि जब मैं घर के अंदर था, तो तब they weren't exactly in a relationship. When things were getting like that, उस time नया mold हो रहा था, and lately things happened. सो मुझे थोड़ा सा तो लगता है, बट अदरवाइज मैंने कभी इतना ध्यान भी नहीं दिया कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग तो मैंने कभी इतना ध्यान दिया नहीं, मैं अपने में मस्त रहता था। वही था, एंड उस टाइम जो मुझे फील हुआ मैंने सीधा बोल दिया। अभी जो मुझे फील हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ सीधा। आपको अच्छी लगती है उनकी पेयरिंग? डेफिनेटली यार, मेरे को करण भाई तेजा दोनों ही बहुत प्यारे लोग लगते हैं, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। जब वो शो जीत कर आई तब कई लोगों ने अनफेयरली भी ये कहा कि क्योंकि वो नागिन कर रही है इसलिए वो जीत के आई। You think that's unfair to an actor first? Of course it is unfair यार, मतलब but actors को इन सब चीजों की आदत है, criticism की और praises की उनको आदत है, and एक point ऐसा आ जाता है then you stop caring about all these comments. Yeah. नए जमाने में बहुत ज्यादा affect करती हैं आपको. So if I talk about my time in Splits, तब मुझे बहुत affect करता था, but lately when I got to know myself ना कि मैं कौन हूँ, then it was like no, I don't care about anyone else's opinion now. If you like me, you like me. If you hate me, you hate me. I don't care. So obviously यार, अगर कोई जीता है तो वो अपने दम पे जीता है। अगर आपको लगता है कि फोर्स्ड है तो खुश रहो उस सोच के साथ यार। मैं क्या बोलूँ आपको भाई, आप घर पे बैठ के टीवी देखो और लोगों को जज करो बस। बिल्कुल। Lastly, where do you think Nagin, how do you think the show will do? How do you think people? I'm sure people around you must have already started speaking to you about it. How excited are you for it? I am तो very much excited about this year because जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे हमेशा से एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करने का मन था, and that too if I'm getting a chance to do it with Balaji, so it's a huge opportunity. Yeah. Plus I love the script, I love the storyline, I love how it's going, I love the way how we are shooting it. We are working like really hard on it, and we're giving it our everything, our blood, sweat, respect, everything is on stake, and I know it will do well. I'm sure it will, and more power to you and everyone who's backing the project. All the best for it. Thank you so much.